Hello everyone, welcome to the Hindu editorial analysis session. आमे लास्ट टाइम अनेक गुड़े इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर डिस्कशन करते आज मु लास्ट वीक र पांचटा इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करी फाइव मोस्ट इंपोर्टेंट द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस हम आज करबा आज टॉपिक जहाँ अच्छे ये बहुत इंपोर्टेंट मे बी स्लाइटली बोरिंग हो पारे बट एग्जाम पर्सपेक्टिव जदि आम देखा मेन्स आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव जदि आम देखा definitely it will work not only for GS papers but also for your essay, interview as well as optional papers. तो सही हिसाब रे आपको प्रिपेयर हेबे एज यूजुअल जेमती पूर्वर मु कहिछि यार नोट्स करिवे ये पीडीएफ को डाउनलोड करिवे ताको लिखिबे खाता रे जीएस 1 2 3 को हिसाब रे अछि बा 4 को टॉपिक रु आसीछि को पेपर रु आसीछि को टॉपिक को सब टॉपिक ये सब को लिखिबे एवं भलो भाबरे पढिबे. Now let's talk about the sources. Current affair पे को सोर्स पढ़िबा दरकार मु बारंबार कहे कि सोर्स यार भीतर ना कन्फाइन रखिबा को चेष्टा करिवे. द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस ईपीडब्ल्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ये गोटे वीकली मैगजीन योजना कुरुक्षेत्र ज्योग्राफी एंड यू डाउन टू अर्थ साइंस रिपोर्टर वर्ल्ड फोकस फ्रंटलाइन बट वास्तविक क्षेत्र में जदि हम देखियो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू कवर ऑल दिस मैगजीन्स इन अ मंथ गोटे पर्टिकुलर मासरे एते टॉपिक को कवर करबा हम पई कष्ट होई जिवो. सो लेट्स ओनली फोकस ऑन द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस केवल आर ऊपर ही फोकस करंतु रेस्ट ऑफ द पार्ट इट जहां देखुचंती याकू समराइज करके हमें आउ गोटे क्लास रे बा अलगा कोनसी सेशन में डिस्कशन करिया. सो हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस पढ़िला बेले जो माने नुवा स्टूडेंट समान को पई कहि दोची कि व्हाट टू स्टडी एवं व्हाट नॉट टू स्टडी कोन पढ़िबे एवं कोन पढ़िबेनी दैट इज मोर रिलेवेंट जानिबा दरकार. प्लीज स्टिक टू योर सिलेबस ओनली सिलेबस बाहर को जीवानी. लेट्स से किछि पॉलिटिकल न्यूज अछि पॉलिटिकली मोटिवेटेड न्यूज अछि कम्युनल वायलेंस क्रिएट कला टाइप रो टॉपिक अछि बा टू सम एक्सटेंट इफ पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व ताल से वाला टॉपिक को छाडी देबे. से टॉपिक हम सिलेबस पई योग्य नुहे बा जो गुडा को मोस्टली मु कहबी नॉन एकेडमिक पार्ट बा हमर नॉन दिस इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस ताल से टॉपिक को कंप्लीटली स्किप कर देबे. ता सहित हमर किछि संपर्क नाही. न ताले को टॉपिक पढिबे कोटी कोटी लेस इंपोर्टेंस देबे ना स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट डेथ अवार्ड पॉलिटिक्स लोकल पॉलिटिक्स रिमार्क्स रिलेटेड न्यूज ऊपर लेस फोकस करिवे एवं कोन पढिबे कोटी अधिक फोकस करिवे ना सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज भलो भाबरे पढिबे. सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज रे कोन आसे इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी मालन्यूट्रिशन हंगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये टाइप रो इश्यू गुडा को अधिक फोकस करिवे. इन द सेम वे सोशियो लीगल इश्यू ऊपर मध्ये फोकस करिवे. सोशियो लीगल इश्यू एवं ये सोशियो लीगल इश्यू ऊपर जदि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अच्छी बा if it is related to strengthening democracy, if it is all about judicial review or if it is all about social justice like providing or ensuring justice to the marginalized section of society कोमन को marginalized section of the society ताले ये जगह ना ताको भलो भाबरे पढिबे. सिक्योरिटी इश्यूज जदि अच्छी लाइक एलडब्ल्यू इश्यूज इंसर्जेंसी इश्यूज आज हमें गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर डिस्कशन करबा लेफ्टिस्ट मूवमेंट इन ओडिशा सॉरी लेफ्टिस्ट मूवमेंट केमती इंडिया रे स्टार्ट हेतिला बा तार इंपैक्ट कोन काहे कि से माने सिग्निफिकेंस कमुची से मानकर बा पढुची ये ऊपर आज डिस्कशन अछि गोटे टॉपिक वल्नरेबल सेक्शन लाइक वुमेन थर्ड जेंडर एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस हैला ओबीसी ये सब पढिबा दरकार एवं आईआर पर्सपेक्टिव रे इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव रे मध्ये जानिबा दरकार कि एंटायर वर्ल्ड रे इंडिया रो सिग्निफिकेंस कोन इंडिया रो पोजीशन कोन ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर रे बा ग्लोबल ऑर्डर रे इंडिया रो कंट्रीब्यूशन कोन इंडिया how far India is responsible to establish peace and prosperity both peace as well as economic prosperity in the Asian region as well as India केमती गोटे विश्व गुरु होबा को चाहूची ये सब मध्य पढ़िबार आवश्यकता रहिछि. तो टॉपिक को कवर करिया पई हेले आपण माने आपनकर सिलेबस को प्रॉपर्ली जानू नो योर सिलेबस प्रॉपर्ली केमती जानिबे ना जीएस 1 2 3 4 जीएस 1 2 3 4 याकू कोन करिवे ना यार गोटे सिलेबस तयारी कर देबे. कोन कहली यार गोटे सिलेबस तयारी कर देबे लिखि देबे एथिरे को सब्जेक्ट अछि को सब्जेक्ट रे को टॉपिक अछि को टॉपिक रे को सब टॉपिक अछि हला सब्जेक्ट टॉपिक और सब टॉपिक ये सब गुडा लिखि देबे जाको हमें माइक्रो सिलेबस बोली कहूचे. कोन कहूचे जाको हमें माइक्रो सिलेबस बोली कहूचे. सो माइक्रो सिलेबस ठीक भाबरे पढिबे बुझिबे को टॉपिक जहां भी पढुचंती व्हाटएवर मे बी द सोर्स केवल मु कोनी द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बा मु केवल कोनी आपन को इंडियन एक्सप्रेस बा ईपीडब्ल्यू जहां भी सोर्स रेफर करूचंती सब बेले देखिबे कि whether it is relevant to your examination point of view or not means main syllabus रे आसुची ना नाही दैट्स ऑल.
एतिक इंपोर्टेंट पॉइंट देखिबा पछ फॉर एग्जांपल देखिबा हम आज रो फर्स्ट टॉपिक अछि लिबरल आर्ट्स डिग्री इज वर्थ मच मोर देन रियलाइज्ड सो एठी डिग्री एटा कहा ऊपर अछि एटा एजुकेशन ऊपर अछि ये क्वेश्चन एजुकेशन ऊपर अछि बा मु कहि परिबी दिस इज ऑल अबाउट कल्चर हिस्ट्री एंड कल्चर सो ई आपनकर जीएस 1 रे आसी पारे एजुकेशन आपनकर गोटे टॉपिक अछि कोठी इकोनॉमिक्स रे अछि जीएस पेपर 3 रे अछि इकोनॉमिक्स सोशल डेवलपमेंट रे जेतळ हमें सोशल सेक्टर इनिशिएटिव पढुचे सेठी एजुकेशन एज वेल एज हमें फोकस करूचे ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटीज सो एजुकेशन गोटे इंपोर्टेंट पार्ट एजुकेशन गोटे ब्रांच होची आपनकर लिबरल आर्ट्स ये कहूची दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट लिबरल आर्ट्स डिग्री इज वर्थ मच मोर देन रियलाइज्ड जति कि हमें भाबुचे लिबरल आर्ट्स रो कोर्स गुडा ये सेतिक नुहे रादर ये ताटु कुछ अधिक तामाने ये हम सिलेबस सहित इन्वॉल्व ये हम सिलेबस सहित एटा खाप खाउची तेणु हम एटा को पढिबा यदि सिलेबस एटा न थांता बा सिलेबस सहित आर किछ रिलेशन न थांता ताले हमें पढि न थांता तो देखिबा टॉपिक को स्टार्ट करिबा नाउ जो एजुकेशन हमें देखुचे ना एजुकेशन डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट थाए व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एजुकेशन कौन चाहे एजुकेशन काम होची सोसाइटी डेवलपमेंट केमती कहा जाए जदि कौन से सोसाइटी को हमें नष्ट करने को चाहूँ देन फर्स्ट destroy its education as well as healthcare facility ये दुटा सिस्टम को नष्ट कर एक्जाक्टली ब्रिटिशर्स डिड द सेम थिंग विथ द इंडियन पॉपुलेशन इंडिया रो लोक मानक सहित ब्रिटिशर माने सेम कथा ही करथिले इंडिया रो एजुकेशन सिस्टम को कंप्लीटली नष्ट कर दे इंग्लिश सिस्टम बा ब्रिटेन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करिया पय चाहे नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम और इंडिया's contribution to different branches of science or arts बा आपनकर कॉमर्स को भी डिसिप्लिन कोंतु मेडिसिन साइंस कोंतु फार्मास्यूटिकल साइंस कोंतु एस्ट्रोलॉजी कोंतु एस्ट्रोनॉमी कोंतु ट्रिगोनोमेट्री कोंतु everyone knows about India's contribution let's talk about mathematics in mathematics जीरो रो इन्वेंशन भारत रो हेची समस्त जानि छथि ट्रिगोनोमेट्री सृष्टि भारत रो हेची समस्त जानि छथि जदि हमें जेमते मेडिसिन बा मेडिकल साइंस को कंट्रीब्यूशन देखिबा चरक संहिता सुश्रुत संहितार कथा समस्त जानि छथि एवं फास्ट प्लास्टिक सर्जरी बा फास्ट सर्जरी ये भी इंडिया रे हेतला बोली समस्त को जणा अछि हैला सेमते एस्ट्रोलॉजी रे एस्ट्रोनॉमी रे इंडियन मानकर कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम सो इंडिया रो पूर्व अनेक गुडे हब थिला जोडा को एजुकेशनल सिटी बा शिक्षार शहर को जाउतला फॉर एग्जांपल यू कैन टॉक अबाउट कश्मीर you can talk about your different universities like Nalanda University, Takshila University ये यूनिवर्सिटी गुडा वर्ल्ड वाइड एजुकेशनलिस्ट बा स्टूडेंट मानको बा स्कॉलर मानको अट्रैक्ट करथिला एठी पाठ पढिया पे एवं समानकर हायर स्टडीज को कंप्लीट करिया पे so this is the contribution of India towards the entire world so far education and healthcare facilities are concerned now education हमें देखिले गोटे इंपोर्टेंट ब्रांच की ना लिबरल आर्ट्स डिग्री तो एटी क्वेश्चन कोन एटी क्वेश्चन कहा जाउची कि जदि ये एजुकेशन बढ़े काहे कि लिबरल आर्ट्स पर काहे कि क्वेश्चन आउची ना वर्तमान मार्केट रे ट्यूशन कॉस्ट इंक्रीज होउची बा कोर्स फीस गुडा को इंक्रीज होउची जॉब मार्केट रे डिमांड चेंज होउची जदि टेक्नोलॉजी पढिची बा किछि स्पेसिफिक नॉलेज अछि सेठी देखा जाउची कि से लोक इजीली बा स्टूडेंट इजीली सही पाठ पढुची जो पाठ पढिवा द्वारा ताको जॉब मिलिबो सो एजुकेशन ऑब्जेक्टिव आउ नाही कि सिस्टम को चेंज करिवा बा एजुकेशन ऑब्जेक्टिव नाही किछि नुआ इन्वेंशन करिवा रादर दिस इज जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन कोन पढिले हमको जॉब मिलिबो सो द पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन हैज बीन कंप्लीटली चेंज एज कंपेयर टू एंशिएंट टाइम पीरियड वर्तमान समय कथा कहूची सो एठी हम जदि देखिबा देयर इज शिफ्टिंग परसेप्शन अबाउट हायर एजुकेशन प्रति मध्य शिफ्टिंग देयर इज अ शिफ्टिंग परसेप्शन कि ये सब बा लिबरल आर्ट्स डिग्री रो जेतु जॉब मार्केट चेंज होउची ट्यूशन कॉस्ट अधिक एटा पढिवार आवश्यकता नाही जदि हम 2008 रो इकोनॉमिक रिसेशन कथा कहबा बा यार इंपैक्ट ह्यूमैनिटी ऊपर बा ह्यूमन बीइंग ऊपर बा सोसाइटी ऊपर कोन पड़ची कहबा एंड स्पेशली लिबरल आर्ट्स ऊपर कोन पड़ची कहबा कोठी नॉर्थ अमेरिका एवं यूरोप रीजन सो ए जगह जदि हम देखिबा देयर इज अ एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस किए फेस करची एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस माने ये पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ एजुकेशन एग्जिस्ट करिवो ना एग्जिस्ट करिवो नाही ये कहा पर एटा की माने एटा कोठी आसुची कहा की फेस करची ना लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम सो एटी क्वेश्चन आसुची कि करंट सिनेरियो रे लिबरल आर्ट्स डिग्री रो किछ रिलेवेंस अछि कि नाही वेदर दे प्रोवाइड रियल वर्ल्ड स्किल्स और नॉट ये माने किछ स्किल दउ छंती कि कैन दो स्किल्स बी मार्केटाइज्ड ताको यूज करी किछ इनकम करा जाई परिवो कि हैला एटा हम कोड देखु छे ना लिबरल आर्ट्स डिग्री रे वर्तमान द कॉज ऑफ कंसर्न
सो लिबरल आर्ट्स डिग्री यही कारण जदि आम देखा पॉलिसी डिस्कशन को पॉलिसी डिस्कशन जदि आम एजुकेशनल पॉलिसी डिस्कशन देखा एजुकेशनल पॉलिसी डिस्कशन देखा एटा सिवियर रु सिवियर क्रिटिसिज्म फेस होछि कोन पई ना फॉर फेलिंग टू इक्विप स्टूडेंट्स विद द नॉलेज एंड द स्किल्स वैल्यूड इन द लेबर मार्केट रे जहां रिक्वायरमेंट जो स्किल रो वैल्यू अछि सेही स्किल को सम्मान मिलुछि कि सेही स्किल को एक्वायर कला परे जॉब मिली पारुछि कि हला सो इट लीड्स टू इनएडेक्वेट फाइनेंशियल रिटर्न्स ऑन देयर एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट जेति कि इन्वेस्टमेंट से माने करिसंती से इन्वेस्टमेंट ऊपर तांको सेमति किछि फाइनेंशियल बा सफिशिएंट फाइनेंशियल रिटर्न मिली पारु नाही सो एट जदि हम देखिबा देयर इज अ डिस्कर्सिव लिंक बिटवीन हायर एजुकेशन एंड जॉब प्रॉस्पेक्ट्स कौन कहल हायर एजुकेशन एंड जॉब प्रॉस्पेक्ट्स सो स्टैटिस्टिक्स जदि हम देखिबा 1966 रे 14% of all college graduates in the United States they are the major in humanities so major in humanities including your liberal arts ए सब्जेक्ट को मध्ये कन्फाइन करिक 2010 रे जदि हम देखिबा एटा 14% रु ना रिड्यूस हे गेला केते जानछन 7% almost kete almost half so it might have something to do with the context within which liberal arts emerged in early modern Europe so ये कौन कला ना basically to avoid manual labor or working with hands याकू reduce करिया पई एटा आसिला so नंबर ता केते माने drastically reduce हे गेला 14% रु 7% so liberal arts education ये include करछि कहा को ना humanities को as well as science so it gives a very unique type of thinking unique type of critical thinking to the students so the idea of liberal arts education it is like antithetical to expectation of regional development which involves some technical training and knowledge it is like development when we talk about development we have to do nothing with the culture रा किछि रिलेशन नाही बा एटी जो आमे देखु जे एटी लिबरल एजुकेशन आर्ट्स एजुकेशन रा कोनोसी इंपैक्ट नाही कहार खाली इंपैक्ट अछि दिस इज अ वेरी जनरल परसेप्शन ऑफ ईच एंड एवरीवन that if you need development then we need the technological adaptation we need a technological upgradation the technological upgradation हुए the technological development हुए ताहाले कोन हबो तेबे ही हमें we can achieve or we can acquire development else we cannot acquire development is this clear to everyone बुझुचंदी समस्त so कोन मु कहली डेवलपमेंट रो थीम टा को हमें बुझी सारजे कि डेवलपमेंट इंक्लूड्स ओनली टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या सहित कल्चरल डेवलपमेंट रो किछि रिलेशन नहीं बट हम इकोनॉमिक्स क्लास रे मु ऑलरेडी डिस्कस करछि आपन मान को सहित कि जीडीपी एंड जीएनएच ये दिटा अलगा जिंस जीडीपी रे हम देखते टोटल प्रोडक्शन ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इट इंक्लूड्स योर कल्चर ये कोन करछि ना इट इंक्लूड्स योर कल्चर ये तुम कल्चर टा को इट इंक्लूड करोछि बुझियला समस्त को तो जीएनएच इंक्लूड्स कल्चर नाउ जीडीपी डजंट इंक्लूड कल्चर GDP includes your total production level केते so एठी हमें देखु जे ए liberal arts education this is like antithetical to expectations of regional development ये कहू regional development हे परियो नाही प्लस ये आउ कोन करूची liberal arts ताले benefit कोन आरो ये it makes a human actual human liberal arts रो objective होची to make a human actually a human ये टी human भीतर humanity को instill करूची सो ये रीजनिंग एवं क्रिटिकल थिंकिंग को इनकॉर्पोरेट करूची कोन करूची रीजनिंग एवं क्रिटिकल थिंकिंग को ये इनकॉर्पोरेट करूची ताले लिबरल एजुकेशन को यदि पढ़ा जाए वर्तमान हिसाब रे ताले जॉब मार्केट रे आर इंपैक्ट कोन पड़ी कोठी कोठी हमको बेनिफिट मिलियो ना प्रथम बेनिफिट मिलिबो हमको एटी वर्साटाइल स्किल मिलियो डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल हमको एटी सिखियो मिलियो कोन कहली एटी हमको वर्साटाइल स्किल मिलियो हला देन आउ कोन मिलिबो कैरियर फ्लेक्सिबिलिटी एवं अडैप्टेबिलिटी मिलिबो कैरियर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडैप्टेबिलिटी बिकॉज़ एटी अपॉर्चुनिटी रहइबो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एटी हमको रहइबो माते लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट शॉर्ट टर्म रे बेनिफिट न होई पारे बट लॉन्ग टर्म रे एटी इकोनॉमिक बेनिफिट मत रहइबो कल्चरल अवेयरनेस एथिकल रीजनिंग बढ़िबो कोन कहली कल्चरल अवेयरनेस इंक्रीज हो एथिकल रीजनिंग इंक्रीज हो लाइफ लॉन्ग लर्निंग एवं रिसर्च एवं लर्निंग स्किल टा थ्रू आउट द लाइफ एटा मध्ये इंक्रीज हो नाउ व्हाट इज द परसेप्शन एटी लिबरल आर्ट्स प्रति एते नेगेटिव इंपैक्ट रहिवार कारण कोन बाटी हम जदी कहिबा ताले एटी परसेप्शन कोन प्रथम परसेप्शन नउची कि लिबरल आर्ट्स ग्रेजुएट समान अनएम्प्लॉयबल चाकरी मिलिबोनी दिस इज ओनली फॉर वेल्दी स्टूडेंट्स
it lacks marketable skills. This is the negative perception about the liberal arts. Now come to the way forward. Way forward रे मु कहितरी सबले सॉल्यूशन टा आपनकर फ्यूचरिस्टिक हवा दरकार बा फ्यूचर सेंट्रिक हवा दरकार. एटी देखिबा वे फॉरवर्ड कोन कहूची ये कहूची इंडिया's education system is increasingly fruitful in delivering liberal and globalized knowledge through initiatives like NEP, new education policy जोडा हमर 2020 रे. So as well as growth of private liberal arts institutions. Gradually ये private institution मानको मध्य हमें प्रमोट करूचे बिकॉज एजुकेशन सेक्टर हो बा हेल्थ सेक्टर हो बिना प्राइवेट इंटरफेरेंस रे एजुकेशन एंड हेल्थ समस्त को मिल पारिबो नाही. ये सुविधा बा ये अपॉर्चुनिटी समस्त को मिल पारिबो नाही. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव हियर? द ऑब्जेक्टिव हियर इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. कौन कहली? अपॉर्चुनिटी. कौन कहली? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल. इज दिस क्लियर? समस्त अपॉर्चुनिटी, और वी कैन से this is all about inclusive education. This is all about inclusive education. Topic 1 over. I mean next topic को आसीबा. Indians needs to share contraceptive responsibility. This is about contraceptive responsibility. एटी क्वेश्चन आसीबा प्रथम सर एटा कोड आसुची को जीएस पेपर रो आसुची ना जीएस3 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट. ताले टॉपिक और सब टॉपिक कौन एटा कोडी आसीबो कॉन्ट्रासेप्टिव ऊपर डिस्कशन. दिस इज ऑल अबाउट योर देयर इज अ चैप्टर डेमोग्राफिक डिविडेंड बा में तळे पॉपुलेशन ऊपर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कथा पड़ुची. टॉपिक सेट अछि एचआरटी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ना. सो जदि हम देखिबा इंडिया रो ना फैमिली प्लानिंग मेथड इंडिया अडॉप्टेड केबे नेशनल प्रोग्राम आइला 1952 रे. स्टिल इंडिया रो पॉपुलेशन बहुत जल्दी जल्दी और रैपिडली ग्रो करि जाउची. समस्त एटा जानिछन्ती कि पॉपुलेशन इंडिया पॉपुलेशन रैपिडली ग्रो करूची, रैपिडली एटा इंक्रीज होची. सो एही कारण आमे चाहूचे कोन ना पॉपुलेशन को रिड्यूस करिया पे ना. पॉपुलेशन इंक्रीज होबा सहित किछि प्रॉब्लम मध्ये सृष्टि होय थाए, जेमति कि मैटरनल एवं चाइल्ड हेल्थ. कोन कहले? मैटरनल हेल्थ एज वेल एज चाइल्ड हेल्थ एटा ना स्टेबलाइज हे पारे. मैटरनल हेल्थ एवं चाइल्ड हेल्थ एटा स्टेबलाइज हे पारे. तो एटा ग्रेजुअल रिड्यूस हो जाय थाए. Number of baby जेतेबेले बढ़िबे, baby one number of baby or woman when gives more number of birth, so automatically it will have impact on the maternal health as well as on the infant health. So जदि infant एवं maternal health एमान मदर एवं infant दी जनकर हेल्थ ऊपर impact पड़े ताहले this is like a loss to the loss of demographic dividend. This is like a loss of demographic dividend. एठी कोन होची ना demographic dividend रो एठी loss होची. They cannot add value, they cannot work as resource, they cannot work as resource. So during 1966-70, about 80.5% of all sterilization procedures in India, they were ये को procedure 80% 1966-70 भीतर जदि हम देखिबा एटी contraceptive रो most important methodology कोन थिला ना vasectomies. कोन थिला? vasectomies. So एटी ये percentage ना every year it is declining. So gradually ये decline ही चलुची. So जदि हम देखिबा NHFS रो 5th round बा 5 round of National Family Health Survey, it shows the use of male sterilization especially in the last 3 decades to be steadily decreasing in all the states. So vasectomies percentage ए केते ना 0.3% in NFHS 4 2015-16 रे असला जोटा एवं NFHS 5. NFHS होची National Family Health Survey method 4th एवं 5th round रे. So जो फैमिली प्लानिंग ऊपर हम डिस्कशन करूचे, ये फैमिली प्लानिंग जदि हम देखिबा इंडिया होची प्रथम कंट्री वर्ल्ड रो जे फैमिली प्लानिंग बा नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग इंप्लीमेंट कला 1952 रे. सो ग्रेजुअली ये प्रोग्राम रे ट्रांसफॉर्मेशन होला इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड एक्चुअल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एंड करंटली being repositioned to not only achieve population stabilization goals but also it promotes reproductive health and it reduces maternal, infant, child mortality. ताले यार ऑब्जेक्टिव कोन हम देखिले ये केवल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन करूनी, पॉपुलेशन रिड्यूस करबा केवल यार ऑब्जेक्टिव नहे. ताले कोन ऑब्जेक्टिव? या सहित रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट करबा, मैटरनल, इन्फेंट एवं चाइल्ड मोर्टालिटी रेट को रिड्यूस करबा मध्ये होची यार बेसिक ऑब्जेक्टिव. So the objectives, strategies and activities of family planning divisions, why they are designed? They are designed and operated towards achieving the family welfare goals and objectives stated in various policy documents. को policy document अच्छी ए रिलेटेड हम पाखरे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, NHP नेशनल
health policy 2017, NHM national rural health mission, and to honor the commitments of government to international conference on population and development, MDG millennium development goals, SDG sustainable development goals. ये सब पॉइंट गुड़ा कहना these are very important keyword. ये keyword को आंसर शीट रे 100% लिखिबे जदि एई टॉपिक रिलेटेड किछि क्वेश्चन अछि। ये जो टॉपिक हमें पढुचे ये केवल जीएस रे हेल्प करिवनी, ये एसए रे भी हेल्प करिवो एवं अनेक गुडे ऑप्शनल पेपर रे भी हेल्प करिवो। मन कर कभी सोशियोलॉजी ऑप्शनल ये नो डाउट हेल्प करिवो एही रिलेटेड जहाँ जहाँ टॉपिक अछि। और वेलफेयर स्कीम्स जेतବେଳେ लेखुछनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये मध्ये सेठी हेल्प करिवो हला। ज्योग्राफी रे जेतବେଳେ पॉपुलेशन ऊपर पढुछनी बा पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढुछनी सेठी मध्ये काम करिवो। ये विभिन्न प्रकार बा इमर्जिंग ऑप्शनल जी सबु जगह रे ये सब काम करिवो जहाँ डाटा हमें पढुचे बा जहाँ कीवर्ड हमें एठी देखुचे। ताले पॉपुलेशन ग्रोथ जोटा हमें देखुचे को फैक्टर पई इन्फ्लुएंस होता है बा को फैक्टर रो इंपैक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ ऊपर पड़ी थाए। प्रथम होची अनमेट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग, अनमेट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग। मन कर मु कहबी लेट्स टॉक अबाउट करेंटली मैरिड वुमेन जो माने दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड टू बियर चाइल्ड और दे wait for next 2 or more years for the next childbirth, but they are not using any contraceptive method. So this is unmet need of family planning. यदि हमें देखिबा this is 9.4. So there is no requirement. There is no requirement. They now currently they don't want to be they don't want child. Currently दरकार नहीं, but this is unmet need of the family पे एटा होछ. Then the next is age at marriage and first childbirth. यदि हमें देखिबा इंडिया रे 23.3% of the girls they get married below the age of 18 years. एथिरु टोटल डेलीवरी जदि हमें देखिबा 6.8% होची टीन एज डेलीवरी 15 रु 19 वर्ष भितर थिबा झियो मानकर जदि हमें डेलीवरी देखिबा केते ना इंडिया रे टोटल नंबर ऑफ डेलीवरी रो 6.8 बा अप्रोक्सीमेटली 7%. दिस डाटा इज नॉट वेरी मच पर्टिकुलर माने एठी पर्टिकुलर डाटा दिया जायछि but answer sheet re depends on you whether you are able to write this 6.8 or you can write on an approximate on an average 7%. No issues on that. केही आपनकर exact fact figure देखिबेनी on an average you can put and use this term approximately. So जदि हम देखले total number of delivery ला 6.8% की ना 15 to 19 एज भीतर अछन. So marriage age जदि हम देखिबा किछि स्टेट रे जदि हम देखिबा एज ऑफ गर्ल्स मैरिज एज देखो बिहार 40%, राजस्थान 25%, झारखंड 32%, यूपी 15%, एमपी 23%. सो एटी कोन होची ना अर्ली मैरिज हमको ए रीजन मानकर अधिक और अधिक देखिया. सो एटी ताले हमर व्हाट इज द सॉल्यूशन हियर? सॉल्यूशन होची वी कैन डिले द मैरिज. कोन करि परिबा ना हियर व्हाट वी कैन डू वी कैन डिले द मैरिज एंड द फर्स्ट चाइल्ड बर्थ. द फर्स्ट चाइल्ड बर्थ ए दीटा को जदी डिले कर दबा ताले ऑटोमेटिकली नंबर पॉपुलेशन मोमेंटम टा कमी जी पॉपुलेशन एते सडनली जोटा इंक्रीज होची सेटा होबा. देन स्पेसिंग बिटवीन बर्थ कोन हेल्दी स्पेसिंग केते ना 132 फार्मूला होची कोन ना 132 फार्मूला कोन फर्स्ट बेबी बर्थ रो 3 वर्ष परे सेकंड बेबी जन्म होबा दरकार. सो 132 मेथड टा समस्त पाकर पहुंचवा दरकार and it should improve the chances of survival of infants as well as maternal mortality rate. Infant mortality rate तक मध्ये हम reduce कर पारिबा. Maternal health mother मानकर lactating women यदि continuously every year let's say the woman is not a child bearing machine, every year a woman gives birth to a child, it means there is a negative impact on the health of the woman. Reproductive health ऊपर impact पड़िबो. यदि हमें basic requirement देखिबा like iron calcium ये सब shortage देखिबा को मिलिबो. As of now, there is not a very clear-cut awareness on consumption of iron, folic acid tablets, or calcium, vitamin D3 tablets. So these are though available by the government policies, different government policies. They are trying to facilitate consumption of this different type of eminent or sorry, this required micronutrients or very important micronutrients. The micronutrients which are very much required for lactating mother, which are required for women. So they lack or India basically lacks in consumption of all these micronutrients because of lack of awareness, because of lack of availability. So nowadays ASHA कर्मी जो माने अछंती सेमानकर काम कोन they facilitates all these things to the adolescent girls, to the lactating mothers or to the pregnant women. सेमानक पाखरे information पहुंचुछ. So what should be the space here? The space is 132, one first child 3 वर्ष पर second child, so that it will give a reducing impact on the population momentum.
So India जदि आमे देखिबा spacing between two child births that is less than the recommended period of 3 years एटा केते ना 47.6% of births 47% 6% of births. Then nationwide जदि आमे देखिबा the small family norm that is widely accepted. So the fertility rate as a whole is 1.6 NFHS 5 अनुसार. General awareness of contraception, this is almost universal, that is 98.8% among women and men. So as per NFHS 5 total fertility rate कहते हैं 2.0. NFHS 5 survey shows 66.7% use of contraceptive among the married women who माने age जो माने कर between 15 to 49. So modern method use somewhat around 56.5%. Now what is the societal perception when we talk about contraceptives? So in general there is a awkwardness in our mind when we talk about this type of issues related to family planning or issues related to child birth and all those, but we should be very clear or should have a very clear awareness about all these things. So this is not a factor or factor of fear, or this is never a factor to be ashamed of. So nothing to be ashamed of here. So what we can do, we can create more and more awareness among, especially among the young couples or during the adolescent time period. So this is the reason for which sex education is required in the school curriculum or in the 12th curriculum. So it should be an important part. It is required there. So what is the societal perception impact on men's involvement in family planning? The kind of perception of burden kon. So generally vasectomy ko this is an undue burden. So there is a fear of loss of wages. So there is a question on the masculinity, the masculine characteristics of a question as well. So this is why this method is not very much widely accepted. First point. Second, so generally in middle class family what they think child or children जो गुड़ा को नुआ जन्म होती एमान को as a matter of responsibility निया जाए कौन ना एमाने बड़ा होला पर responsibility नेबे मा एमाने income generate करिवे एमाने कौन करिवे ना income generate करिवे. So लोक भावंती कि मोर जदी गोटे जगह रे if I have 10 child or 8 child, every day if each child earns 20 rupees, sorry 200 rupees, each child earns 1600 rupees. So এই angle देखते कि जिते अधिक number of offspring हेबे सेमाने तांका responsibility नेबे को समय old age time period. Then the next is lack of awareness recommend. Cultural norms, different type of cultures, they prohibit different type of cultures, they prohibit this men's involvement in case of family planning. So we already there's a question on their masculinity, that's why. Now let's have a look into the international context. Let's have an international comparison. So India eti हमको शिक्षा दरकार कोडू so far vasectomy optics are concerned, we should learn from South Korea. So South Korea रे जति हमें देखिबा there is highest prevalence of the procedure worldwide. So it was reported that men are more likely to shoulder contraceptive responsibilities as a result of progressive societal norms and great gender equality. In the same way, Bhutan जदि हमें देखिबा Bhutan रे मध्य vasectomy procedure, this is very much popular. So it is socially accepted. Unless it is socially accepted, जितपर्यंत ये socially accept आपको न करा जायछि एको people will not accept it. But awareness create जेपर्यंत न करा जायछि एटा को लोक माने avail करिवे. So when we talk about good quality service, medical facilities, vasectomy camps ये सब आवश्यकता अछि. जब ब्राजिल ला कथा देखिबा ब्राजिल केवल अवेयरनेस पढ़ै चला अवेयरनेस कैंपेन ऑन मास मीडिया रे अवेयरनेस कैंपेन इंक्रीज करी करी ब्राजिल vasectomy ई मेथडोलॉजी टाको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथडोलॉजी टाको ये पॉपुलर कर देला. So we should learn, India should learn all these things from Brazil. So prevalence range, जब हम देखिए prevalence rate increased from 0.8% to 5% in last decade. So 30 वर्ष भीतर ये 0.8 to 5% को increase कर सकते हैं. So then what is required? What is required is greater public awareness is required. Public awareness of both the partners, so that they can unitedly they can take a family planning decision. All right. So I think
second one is everyone clear. Second topic clear. Now come to the third topic. Third topic is there on certain terrorism index, or here we will be talking about uh, insurgent groups जो माने कौन करछन insurgent groups, transformation of insurgent groups, transformation of insurgent groups to democratic procedure है ना एटा बोल अछि हेडिंग टा बोली जाय छी लास्ट टा तो थर्ड टॉपिक को आसला थर्ड टॉपिक रे कोन इंपोर्टेंस छी बाको हमें काहे पढछि इंडिया रैंक एटी केते इंडिया रैंक होची 4th आउट ऑफ 159 कंट्रीज कोथरे एंड ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कोथरे कहली इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स so it shows a high level of internal conflict and the presence of different type of extremist groups. Now what are ए ग्रुप माने जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अछंती बा इंसर्जेंट ग्रुप अछंती ए माने को टाइप रो इशू क्रिएट करछन इंडिया जदि हम देखिबा ए माने सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करछन कोन ना सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करछन आ कोन सोशल एवं इकोनॉमिक फैक्टर so insurgencies that is fueled by deep rooted issues like poverty, land dispute, social marginalization ये सब फेस करिया करछन. There is political dynamics. Political dynamics कौन? There is rise of right wing politics in India. जेहेतु right wing politics develop होची gradually पड़ुची left wing politics ऊपर भी impact पड़ुची. Right wing और left wing कौन? Left wing basically जे गवर्नमेंट को अपोज करन जो माने लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी ऊपर जो माने फोकस करन हला से माने लेफ्टिस्ट मु पढै छी आपरे इंटरनल सिक्योरिटी. So these are the challenges that they are facing. एटी श्रीलंकार कथा मु कहूँ गोटे एग्जांपल दिया है कारण श्रीलंका कौन है श्रीलंका जेवीपी लेड नेशनल पीपल्स पावर जनता विमुक्ति पेरामोना जेवीपी लेड नेशनल पीपल्स पावर ये पार्लियामेंटरी और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रे सक्सेस पाइछि कंप्लीट. सो इट शोज अ वेरी नोटिसेबल ट्रेंड. एटी लेफ्ट विंग रिवोल्यूशनरी ग्रुप जो मानकर काम कौन थिला रिवोल्यूशनरी ग्रुप व्हेन वी टॉक अबाउट लेफ्ट विंग रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स इन इंडिया समस्त मन में माओवादी मानकर ना जोड़ा कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्मेशन कर लाइक सीपीआईएम सीपीआईएमएल मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट एमाने सब लेफ्टिस्ट पार्टी एमानकर ऑब्जेक्टिव पूर्व कौन थिला ना आर्म स्ट्रगल थिला बट दे चेंज देयर ऑब्जेक्टिव आर्म स्ट्रगल रु हटिकी ऑब्जेक्टिव को समान चेंज करले कोन डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट डेमोक्रेटिक मेथोडोलॉजी रे दे स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन कौन कले से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करिया को लागले ग्रेजुअली. सो जोड़ा मार्क्सिज्म लेनिनिज्म माओइज्म चिंताधारा उद्भूत थिले जो माने ए आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करूथिले these groups have viewed the state as a tool of capitalist oppression. लेफ्टिस्ट बा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बढ़िबार कारण कोन थिला लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बा भारत रे माओवादी बा माओइस्ट माने केबे आसिले 1967 रे ये स्टार्ट हला कोडी स्टार्ट हला नक्सलबारी विलेज कोडी नक्सलबारी विलेज एटा कोडी अछि नक्सलबारी विलेज अछि वेस्ट बंगाल कहा का भीतर स्टार्ट हला बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स का भीतर कहली बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स हैव्स किए और हैव नॉट्स किए हैव्स होचंती रिच हैव नॉट्स किए ना पुअर रिच किए ना रिच रेट असले जमींदार पुअर रे असले किए पुअर रे असले जो माने तांग पाकर भाग चाषी काम करथले बा मूलिया मजूरिया श्रेणी लोक माने लेबर सेक्शन असले हला तो 1967 ने हम देखले एटा स्टार्ट हिच सो एटी डेमोक्रेटिक सॉरी कोन कहतले हमें हां काहे के असले एटा ना कैपिटलिस्ट ऑपरेशन पाई कैपिटलिस्ट के रिच माने एमाने ले कैपिटलिस्ट एमाने को चिंताधारा रे को आइडियोलॉजी को मानंती एमाने कैपिटलिज्म को मानंती कैपिटलिज्म एमाने कहा को मानंती सोशलिज्म सोशलिज्म रे फॉर द सिटीजन सोशलिज्म रो ऑब्जेक्टिव की सब सिटीजन रो उन्नति बा डेवलपमेंट कैपिटलिज्म रो की कैपिटलिज्म रो होची कस्टमर किए द सिटीजन हैविंग परचेजिंग पावर इज कस्टमर जो सिटीजन पाखे परचेजिंग पावर अच्छी कस्टमर कहुए मनकर आम कहले गोटे साधारण लोक को हेल्थ केयर फैसिलिटी दरकार द पर्सन विल अप्रोच द योर एससीबी मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल को जीव बट प्राइवेट सेक्टर को अच्छे अफोर्ड कर परछि अपोलो जाई परछि हाईटेक जाई परछि देन ही इज अ कस्टमर ही इज नो मोर अ सिटीजन तो सिटीजन को टेक केयर किए करिवो ना इटी गवर्नमेंट बा ये सोशलिज्म रो कांसेप्ट आछि तो इटी कैपिटलिस्टिक ऑपरेशन को रिड्यूस करिया पई कैपिटलिस्टिक ऑपरेशन को रिड्यूस करिया पई
यही टाइप रो जो हम देखुचे लेफ्टिस्ट चिंताधारा गुड़ाक अधिक अधिक बढ़ी एक्टिविटी इंडिया रे बढ़ी बढ़ी जाती। सो जदि मु कहबी किछि प्रोमिनेंट इंसर्जेंसी ग्रुप लाइक नेपाल माओइस्ट, नेपाल ले मध्य माओवादी माने वेरी मच एक्टिव। एल साल्वाडोर्स पैरागुंडो मार्सी नेशनल लिबरेशन, सर्टेन मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ग्रुप्स विद इन इंडिया, एमाने कोन करचंती ना एमाने दे आर ट्राइंग टू एंटर इनटू द पार्लियामेंटरी पॉलिटिक्स। पार्लियामेंटरी पॉलिटिक्स दिस इज वेरी मच लेजिटिमेट पॉलिटिक्स। माओवादी मानक ऊपर पढ़ला बेले मुझे डिस्कशन करथिले ऑब्जेक्टिव कोन ना रेड फ्लैग फ्रॉम द रेड फोर्ट बाय 2050। But red flag from the red fort, this is quite difficult. Acquiring the power of the government, overthrowing the government, creating a new government, legitimate government को बाहर कर दवा, maybe by mass mobilization, maybe through guerrilla warfare or through strategic amalgamation। यही strategy मानक द्वारा लेफ्टिस्ट माने बा माओवादी माने सबले तांकर डेवलपमेंट चाहन बा एटा होची सेमानकर बेसिक विजन, याकू नै कि सेमाने ग्रो करन। So, apart from all these things, nowadays they are trying to enter into the parliamentary politics. अर्थ एमएलए एमपी इलेक्शन लड़ुछंती, लड़िला परे कोठी कि जीवक चेष्टा करछंती ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आदिला जोर पार्लियामेंट जाई कि सेमाने सरकार रा गोटे पार्ट होबा चाहत। सो जो शिफ्ट एटा केवल भारत रा कथा कोन, एटी मु एग्जांपल देखैली श्रीलंका रा, एटी एग्जांपल देखैली नेपाल रा। हला सो ए जो शिफ्ट हमें देखुचे ये कोन देखौछि ना, इट शोज आइडियोलॉजिकल एडाप्टेशन एंड रेस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग पॉलिटिकल रियलिटीज। So लोक माने बुझी सारिलेनी कि the method of exploitation what these people are showing, the leftists what they are showing and what they are actually doing is different. What they are showing and what they are doing is different. So this is the reason for which their number of followers is reducing. So now they cannot agitate against the government that the government's developmental model or inclusive form of development doesn't include each and every section of society, especially the tribal population. Earlier time period there was no method of communication, no transportation, so no social media, nothing else, kichi nathila se samay, but nowadays media or communication with the people it becomes very much easy. Now government can send a message directly to the grassroots level, to the panchayat level and to each and every household the government can send a message. Earlier time period re emane kon korthula se message ta ku lokmanank pakhare pahunchai donu। so jo communication gap create hotula between the public and the government, तार बेनिफिट किए उठाउथिले नाइ लेफ्टिस्ट संस्था माने बाय ऑर्गेनाइजेशन। जेतो वर्तमान एटा कमी गलानी, द नाउ द प्राइम मिनिस्टर कैन डायरेक्टली एड्रेस द each and every household। now it is this is a very much difficult situation for these leftist parties to be connected to the rural household बा जदि हम कहबा प्रत्येक लोक पाखरे पहुंची आंक पई कष्ट होइना। दैट्स व्हाई जो चेंजिंग पॉलिटिकल रियलिटी देखिबा को मिलला, सेमाने मध्ये बाध्य होय कि सेमानकर स्ट्रगल रो मेथोडोलॉजी टाको चेंज कर देले एंड दे स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन प्रोसीजर। सो एमानकर ऑब्जेक्टिव कोन था, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इंसरेंस रो ऑब्जेक्टिव कोन था, कैपिटलिस्ट स्टेट को कमेइबा, कैपिटलिस्ट स्टेट को कमेइबा एवं सोशल जस्टिस एन्श्योर करबा। कोन करबा, सोशल जस्टिस एन्श्योर करबा। सो एमानकर इंटरेस्ट सब बेले कहा ऊपर ना, दलित निष्पेषित बा जो माने मार्जिनलाइज सेक्शन सेमानक ऊपर तांकू डेवलप करियो। सो एमाने को मेथोडोलॉजी को यूज करथले ना, आर्म स्ट्रगल को यूज करथले, आर्म स्ट्रगल मेथड को यूज करथले। सो इति हम अनेक गुडे मूवमेंट मु ऑलरेडी कहली, एल साल्वाडोर मूवमेंट, नेपाल, श्रीलंका इट्स मध्ये हमको एटी देखिबा पय मिलछि। सो प्रिंसिपल कोन ना, एमानकर प्रिंसिपल होछि प्रोटेक्टेड पीपल्स वार। प्रोटेक्टेड माने लॉन्ग टर्म पीपल्स वार to achieve revolutionary overthrow of the state। state power बा गवर्नमेंट को revolutionary way रे revolution करिके overthrow करबा हथिले हमनकर बेसिक ऑब्जेक्टिव। now why there is a shift, जो माने आर्म्स एंड एम्युनिशंस बा जो माने इंसर्जेंसी रे इन्वॉल्व थिले से माने इंसर्जेंसी रो आसी वर्तमान को डेमोक्रेटिक मेथोडोलॉजी रे काहे की इंटरफेयर करछन। इंसर्जेंसी आर्म्स एंड एम्युनिशंस को छाड़ी देई डेमोक्रेटिक मेथोडोलॉजी रे से माने काहे why are they trying to enter into the government, काहे की ना जदि इंडियन कॉन्टेक्स्ट देखिबा देयर इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स स्टोरी। सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, इट कंटिन्यूज टू परस्यू आर्म्ड इंसर्जेंसी। कोठी ना रूरल एरिया रे ये आर्म्ड इंसर्जेंसी चलैतला। केतेबेले जेतले गवर्नमेंट प्रेजेंस टा वीक थिला, म ऑलरेडी बुझेली, जेतले गवर्नमेंट ए रीजन रे पहुंची पर नथिला, जेतले 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आसिला एवं ग्रासरूट लेवल रे गवर्नमेंट आसिला, वार्ड मेंबर आसिले, सरपंच आसिले, जिला परिषद आसिले, ब्लॉक डेवलपमेंट ब्लॉक रो चेयरमैन आसिले। सो जो ग्रासरूट लेवल ले पार्टिसिपेशन बढ़िला बा गवर्नमेंट रो रिप्रेजेंटेशन बढ़िला, गवर्नमेंट रो वॉइस बढ़िला, ऑटोमेटिकली एमानक मन रे भय आसिला कि याव गवर्नमेंट अगेंस्ट रे किछ कहि परिबा।
सो ए रीजन नु जेतले गवर्नमेंट रो प्रेजेंस टा रूरल एरिया रे वीक थिला एमाने कोन करथिले एमाने कोन करथिले ना आर्म्ड इंसर्जेंसी टा कंटिन्यू करथिले हला सो एटी प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वार सेही समय ही चलेथिला बट माओवादी संस्था भितर माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन भितर मध्ये डिफरेंट फैक्शन हला मु ऑलरेडी गोटे क्लास आनीथिली एटी देखिबे डिफरेंट माओइस्ट अटैक इन ओडिशा ओडिशा रे कोन कोन माओइस्ट अटैक हेची यूट्यूब रे एटा अवेलेबल हला डिफरेंट माओइस्ट अटैक इन ओडिशा मेजर माओइस्ट अटैक इन ओडिशा माओइस्ट माने केमती ओडिशा रे फॉर्म हले केमती पार्टी फॉर्मेशन हला या पर मु आ गोटे क्लास आनी जोटी इन डिटेल डिस्कशन करिन सो एटी माओइस्ट फैक्शन डिफरेंट हमको देखिया को लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लिबरेशन then by 1980s CPI ML liberation it shifted to democratic participation it started contesting elections and it became a political party माने गोटे गोटे पॉलिटिकल पार्टी हे गले एवं सेमानकर फॉर्म बा सेमानकर आइडेंटिटी को चेंज कर देले सो जो चेंज हे गला कोउतरे ना आर्म्ड स्ट्रगल रु इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को चेंज हला एटी को फैक्टर ऊपर इंपैक्ट पकेला जे ये माने आर्म्ड स्ट्रगल रु पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नाड को मोहाइले सो जदि हम देखिबा स्ट्रैटेजिक रियलिज्म वास्तविक क्षेत्र रे कोन होउची सो जो प्रोट्रैक्टेड लॉन्ग टर्म इंसर्जेंसी माने करूतिले दे आर रिसोर्स इंटेंसिव so they are unsustainable जब सेमानकु आर्म्स एंड एमुनिशंस न मिलुची कंटीन्यूअस फंड न मिलुची कंटीन्यूअस आर्म्स न मिलुची तल सेमान कोन करिवे आ तो देयर इज नो वे जेटा न मिलुची देन देयर इज नो वे सेमानकु खरा कुछ ऑप्शन ही नहीं हला सो ऑटोमेटिकली एमाने कोन करिवे ना पॉलिटिक्स रे पार्टिसिपेट करिवे एटा नेपाल रे हमकु सेम जिंस देखिया को मिलला एल साल्वाडोर ये कंडीशन मध्ये हमकु सेम जिंस देखिया को मिलला सो एठी पब्लिक सेंटिमेंट ये ला गोटे फैक्टर कहली सेकेंड फैक्टर कौन ना शिफ्टिंग ऑफ पब्लिक सेंटिमेंट पूर्वर जो पब्लिक पॉपुलेशन बा सिविलियन माने मानको सपोर्ट करूथिले कि नहीं माने जहा कहउछन ठीक गवर्नमेंट से मानकर डेवलपमेंट करूनी गवर्नमेंट इज नॉट लुकिंग इनटू द डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स लैंड एलिनेशन होउची देन फोर्सफुल कन्वर्जन होउची बा फोर्सफुल डिस्प्लेसमेंट होउची डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट होउची ये जो कांसेप्ट माने आनिथिले ग्रेजुअली ना पब्लिक सेंटिमेंट भी चेंज हो गला पब्लिक जानिला कि गवर्नमेंट इज एक्चुअली वर्किंग फॉर अस गवर्नमेंट हमर इंक्लूसिव डेवलपमेंट करिया को चेष्टा करूछ कोन कहला गवर्नमेंट हमर एक्चुअली इंक्लूसिव डेवलपमेंट करिया पई चेष्टा करूछ सो दैट इज व्हाई पब्लिक सेंटिमेंट चेंज होवा कारण मध्य एमाने ताको फॉर्म चेंज कर देले आर्म स्ट्रगल लु इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एना सपोर्ट न कले की करियो यदि गवर्नमेंट सॉरी यदि पब्लिक सपोर्ट न मिले ताले कोन हे परियो बिना पब्लिक सपोर्ट तो पब्लिक सपोर्ट कमी गला जेतु कमिला से माने बाध्य होले कोउतरे डेमोक्रेसी को एंट्री करिया देन इंटरनेशनल प्रेशर रे कोन ना पीसफुल पॉलिटिकल एंगेजमेंट पाई माने कहले इंटरनेशनल एक्टर्स माने फोर्स कोले कोन पाई ना जो माने वायलेंट इंसर्जेंट ग्रुप थिले जो माने इंसर्जेंसी करथुले लॉन्ग टर्म रे तांकोले इंसर्जेंसी छाडी दियो एवं डायरेक्टली पॉलिटिक्स को पळे आस मु इंसर्जेंसी पढेला बेले इंटरनल सिक्युरिटी रे जेतो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द योर मिजोराम ऊपर डिस्कशन हम करथुले क्लास रे तो सेठी मध्ये डिस्कशन करथुले नागालैंड ऊपर डिस्कशन करथुले केमती नागालैंड एवं मिजोराम रे जो इंसर्जेंट आउटफिट माने थिले से माने कन्वर्ट हे गले कोठी ना पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रे से माने मिशी गले सो यूनाइटेड नेशन एल साल्वाडोर रे यूनाइटेड नेशन प्लेड वेरी इंपोर्टेंट रोल हैला कोन पई ना मीडिएटर हिसाब रे का भीतर गवर्नमेंट एवं एफएमएलएन जोटा हम बर्तमान डिस्कशन करथुले गवर्नमेंट आ एफएमएलएन भीतर ये मीडिएटर करके इंटरनेशनल प्रेशर द्वारा एटा को रिड्यूस कर दिया गला मैं मानु कन्वर्ट कर दिया गला सो एठी ना ये जो इंसर्जेंट ग्रुप मानक ऊपर हमें पढुचे कंटीन्यूअसली दे अंडरगो आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन लेट्स टॉक अबाउट माने कहा ऊपर डिस्कस करन कहली ना जो माने मार्जिनलाइज सेक्शन मार्जिनलाइज्ड बा vulnerable now marginalized concept कोन this is a dynamic concept marginalized बा vulnerable ता dynamic concept सब बेले वुमेन दे आर नॉट मार्जिनलाइज्ड सब जगह रे मु कहबी एससी एसटी पॉपुलेशन ईडब्ल्यूएस पॉपुलेशन दे आर नॉट मार्जिनलाइज्ड ए माने कन्वर्ट भी जाई पारंती एम्पावर्ड ग्रुप को आ गोटे कम्युनिटी जेथिबो से मार्जिनलाइज होई जेहेतु ये डायनामिक एमानकर आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन टा भी कंटीन्यूअसली डायनामिक हे जाउची बा चेंज हे जाउची so that's why they are mixing or joining their hand with the democratic frameworks okay so JVP in Sri Lanka ये कौन कला ना जो यार मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट माओइस्ट ग्रुप थिला ये कहला कहा फॉर ये एडवोकेसी कला ना सोशल जस्टिस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर
डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर माने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके टॉक्ड अबाउट सोशल जस्टिस मींस अपलिफ्टिंग द मार्जिनलाइज सेक्शन एई मानकर अपलिफ्टमेंट ये चाहिला मार्जिनलाइज सेक्शन मानकर अपलिफ्टमेंट चाहिला सो जेतेबेले ई माने दे व्हेन दे चेंज देयर आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑटोमेटिकली देयर इज नो वे apart from joining their hands in the democratic form of government or democratic politics रे join करिया व्यतीत समान पखरे आउ किछि ऑप्शन ही रहला सो इंसर्जेंसी रु इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को एमाने कोन कले ना शिफ्ट हे गले इंसर्जेंसी रु इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को एमाने शिफ्ट हे गले so while they may have dismissed democratic system as capitalist instrument many now use them to drive change एटा को जोटा को समान स्टेट बा कैपिटलिस्टिक सिस्टम कहउतले स्टेट को कोन कहउतले कैपिटलिस्ट भाई दिस इज फॉर द रिच से माने एटा को यूज करथन कोन पई वर्तमान ना चेंज पई सो रिवोल्यूशनरी आइडिया गुडा को ग्रेजुअली रिड्यूस हे जाउछ हला वायलेंट रिवोल्यूशनरी जो गुडा थिला ये सब रिड्यूस हे जाउछ एवं डेमोक्रेसी को इंपोर्टेंस दिया जाउछ एग्जांपल कोन ना नेपाल इज माओइस्ट एमाने प्रायोरिटी देले कहा पर ना रूरल एवं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी ऊपर इंक्लूसिव गवर्नेंस ऊपर करप्शन कम गवर्नेंस इंक्रीज हो ता ऊपर माने फोकस करियो लागे जो ट्रांजिट हमको देखियो मिलुची आर्म्स इंसरेक्शन रु पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को नाउ इट रिसेव्स द कंटेम्पररी इंसर्जेंसीज so it reveals that radical movements can evolve within democratic framework रे radical movement गुडा को कन्वर्ट करा जाय पारि so most important part एटा को मन रखिबे एटा आपनकर GS3 इंटरनल सिक्योरिटी रे आछी बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक poor air quality schooling in India in the time of poor air quality जो currently हमको poor air quality देखियो को मिलुची कोडी दिल्ली रे देखियो को मिलुची तार ऊपर एठी डिस्कशन होची सो मिड नवंबर 2024 रे यदि हम देखिबा एयर पोल्यूशन को टैकल करिया पई देयर इज अ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जेतबेले एयर क्वालिटी इंडेक्स टा हमको केते मिलिला ना पोर एयर क्वालिटी इंडेक्स मिलिला पोर एयर क्वालिटी इंडेक्स जेतबेले हमको मिलिला so while other restrictions imposed as a part of your graded response action plan it will have impact on the air quality so the decision जो आसिला स्कूल को ऑफलाइन स्कूल को ऑनलाइन मोड रे कन्वर्ट कर देबा एग्जामिनेशन को कन्वर्ट कर देबा नाउ air quality index ऊपर when there is a question on air quality index or when there is a question on climate change there is always a question on climate justice there is always a question on climate justice so people of or the students or the people of Delhi they need justice provided by the government against the climate change so जति हमें ऑफलाइन स्कूल टाकू ऑनलाइन कर दोचे तार साइंटिफिक रैशनल केते तार प्रैक्टिकेबिलिटी केते तरे बेनिफिट कोन रिस्क कोन ये सब को मध्ये हमको एनालिसिस करबार आवश्यकता अछि सो नॉर्थ इंडियन स्टेट मानकरे हमको एटा देखियो अधिक और अधिक मिले पोर एयर क्वालिटी इंडेक्स एवं दिस इज वेरी मच हार्मफुल फॉर एनी एज ग्रुप नॉट जस्ट फॉर children are more vulnerable but for any age group this is important and this is vital so there is harmful health effects of poor air quality जदि हमें चिल्ड्रेन देखिबा they are suffering from this protected they are protected from poor air quality moment so जेतबे air quality index टा 50 क्रॉस हो जाय सेतबे एटा ग्रेजुअली यार माने एटा गुड एयर क्वालिटी रु बैड एयर क्वालिटी हो जाय सो जदि हमें दिल्ली रे देखिबा बहुत कम दिन अछि जोटी हमको गुड एयर क्वालिटी मिलता 2024 रे गोटे सिंगल डे नाही जोटी गुड एयर क्वालिटी हमको दिल्ली रे मिलतला बा 𝐎𝐾𝐈 टा एयर क्वालिटी इंडेक्स टा 50 रु कम थिला सो मोर देन 50 हे गले दिस इज पोर सो मोर देन 400 हे गले एटा सिवियर बा सिवियर प्लस सो ताला हमको एटी कोन देखिया को मिलुची ए कंडीशन कोन 51 रु 399 51 रु 399 एयर क्वालिटी इंडेक्स हम कोन देखिया को मिलुची ये कंडीशन रे दिस इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर स्पेशली फॉर चिल्ड्रन and for the old age people to come out and to breathe or respirate so जो COP29 हेतिला recently या ऊपर भी हमें क्लास करथिले बाकू अजबेरिस्तान ने हेतिला एटा जो केबे 11 रु 22 नवंबर 2024 रे या ऊपर 25 स्पेशल क्लास करथिला हम एठी ही डिस्कस करथिले एडिटोरियल ले so it is about to shift focus to the heated discussion on the aspect of climate finance ऊपर ये डिस्कशन करिया पई चाहूची सो कोन ना कार्बन क्रेडिट फ्रेमवर्क ऊपर बे डिस्कस करनी लास्ट क्लास रे कार्बन क्रेडिट ऊपर भलो भाबरे डिस्कशन हेतला सो
So जदि आमे देखिबा India operated its nationally determined contribution in 2023 रे इताको डेवलप कर दे. So there is Energy Conservation Amendment Act 2022 which provided a statutory mandate for such a carbon credit trading scheme. So India aims to align its climate commitments under the Paris Agreement with broader economic goals. ये विषय डिस्कस करनी आप समस्त पढ़िथिबे एनवायरनमेंट रो अधिक बट खाली मु ई कॉन्टेक्स्ट भितरे यार भितरे ही कन्फाइन करूची. सो मोस्टली चिल्ड्रन माने दिल्ली रे एवं अदर पार्ट ऑफ द कंट्री अदर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया रे बिकॉज ऑफ पुअर एयर क्वालिटी से माने स्कूल गुडा सब बंद हो जाउची बा स्कूल को न आसीबा को प्रिफर करछन. सो नाउ व्हाट अबाउट ऑनलाइन क्लासेस. ऑनलाइन क्लासेस रो प्रॉब्लम कोन ना प्रथम एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होची देयर इज नो इक्विटी कोथरे ना डिजिटल एक्सेस समस्त पाखरे डिजिटल एक्सेस नाही फोन इंटरनेट कनेक्शन नाही एवं फर्स्ट पॉइंट. सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट कोन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन कोन ना जोटा मिलुतला से मानको मिड डे मील स्कीम थ्रू रे जोटा से मानको मिलुतला से खाइबाटा एठी मिलिबन न्यूट्रिशन टा भी एठी कमे जो जहार इंपैक्ट का पर पडिबो ना हेल्थ ऊपर पडिबो. So online class जदि हमें देखिबा is online class always a replacement for the school children. Higher studies it is separate, but what about school children? Whether it is a replacement for school based curriculum, school based education, the answer is no. कहीं ना स्क्रीन टाइम टा बढ़ी जो जहार इंपैक्ट सेमानको माइंड मेंटल कंडीशन ऊपर पडिबो आखि ऊपर पडिबो. So when they are forced to attend online classes, they are being exposed to more harmful behavior than receiving any possible or perceived benefit. So rest of the world को भी समान expose है ना, rest of the world को भी through online medium समान expose है. So there is a question on converting it to the online school, completely online school. Then what should be the way forward? गोटे पर गोटे एठी पांचटा पॉइंट मु डिस्कस करिवि way forward रे. First point, schools should not be made switch to online classes. Whatever may be the AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स किछि भी हो स्कूल टा कंप्लीटली ऑनलाइन न होवा दरकार. काहेकि ना स्कूल फंक्शनल होवा दरकार लर्निंग कंटिन्यूटी पई. कोविड टाइम पीरियड रे सब ऑनलाइन हो जायता. गोटे रिपोर्ट आसीतला देखिबे सेथिरे क्लास 8 रे पढुथिया पिला क्लास 5 रो पाठ कहि परनो, क्लास 5 रे पढुथिया पिला क्लास 2 रो पाठ कहि परनो. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस इरेगुलरिटी. सो एटी रेगुलरिटी दरकार एजुकेशन सिस्टम. नेक्स्ट इज तो एटी कौन हुआ दरकार ताले सॉल्यूशन ना पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर लाइक यूज ऑफ प्यूरिफायर फेस मास्क ये सब यूज करवा दरकार. ये सब को रेकमेंड करवा दरकार बाय एज हला प्लस प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यू कौन अछि एवं एज कौन से अनुसार एटा को डिसाइड करवा दरकार. जो मानकर प्री एग्जिस्टिंग रेस्पिरेटरी हेल्थ इश्यूज अछि दे आर लाइकली टू बेनिफिट मोर फ्रॉम मास्क वेयरिंग स्पेशली पॉल्यूटेड एवं ओपन स्पेस रे. इट डिपेंड्स मेडिकल हिस्ट्री को नै किया को फाइनल करा जो. सेकंड, there is no need for a uniform directive for mask wearing. समस्त मास्क पिंधवार किछि आवश्यकता नै. So schools they are not the only source of pollution. केवल स्कूल ले कोन pollution होछि? Pollution तो throughout the state or throughout the city होछि. So इति सब जगह यूज करिवार किछि आवश्यकता नै. So air quality जदि हमें देखिबा it is same as compared to school ले air quality जा पिलार घरे भी air quality से. ताले स्कूल बंद कर एक्स्ट्रा लाभ कोन मिलुछि? So therefore it doesn't make any sense to do anything differently in school than what is done at the home. So children and parents wear a face mask at home, they can wear it at school as well. So no additional mandatory mask wearing measure is needed. There is a need to remember that face masks can also have negative effects like it may cause skin allergy or it may create discomfort. So jitole ame ye सब विषय रे भाबुचे we have to keep in mind so many things. So the children who are younger than 12 years they should not be made to wear N95 masks. एमाने 12 वर्ष रु छोटो जो मानकर बयस से माने N95 मास्क टा यूज न करिया दरकार. Even during the periods of severe or above air quality index, children who have pre-existing health issues or parents who wish to keep their children at home, they should give an opt-out option from physical classes. So let not the offline class be substituted with online. Let online classes be an additional source of study for the students. Let the offline class be there, physical class, in-person class be there. Additionally, make this class available. Online class, additionally make this online class available.
थर्ड पॉइंट स्कूल एवं अदर रीजन मानकर जदि हम देखिबा फंक्शनल एयर प्यूरिफायर यूज करि परिबा मास्क वेयरिंग इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी एडिशनल एडवांटेज सो एटी कोन करि परिबा ना एयर प्यूरिफायर ये सिस्टम को हमें अडॉप्ट करि परिबा फोर्थ ऑनलाइन स्कूलिंग इज एन ऑक्सीमोरन so school it is not a school if teaching is online teaching is good for higher studies or for any other purpose that is different but for school going children this is not only about study this is all about extracurricular activity this is all about interaction with friends all about interaction with the teacher guidance ये सब मध्ये आवश्यकता रही so online को हमें completely switch करिया पूर्वरु what we should think about देखो एटी आंसर हमें वन साइडेड लिखिबानी लिखिला मिक्स करके लिखिबा ऑनलाइन ऑफलाइन दीटा जाकर रादर एटी तो जो आर्टिकल आसीतला एटी ऑथर ऑनलाइन को कंप्लीट बैन कर दिछथि बट वी कैनॉट कंप्लीटली बैन दिस वन कंप्लीटली हमें बैन करि परिबानी हमें एटा को बैलेंस करके लिखिबा बिकॉज़ ऑनलाइन इज आल्सो रिक्वायर्ड तो ये गला ऑनलाइन और ऑफलाइन स्कूल भीतर लास्ट poor air quality is a reminder that anyone who has pre-existing health or respiratory conditions should take better care of their health so routine checkup regular follow-up with the doctors preventive intervention annual influenza vaccination age appropriate recommended vaccines like pneumococcal or measles or hemophilus influenza type B ये सब गुड़ा को ठीक टाइम रे नवा दरकार so these are the solutions for which we can advocate for ये गला फोर्थ टॉपिक लास्ट टॉपिक में आसीबा फ्रॉम अ रिपब्लिक टू रिपब्लिक ऑफ अनइक्वल्स सो दिस इज ऑल अबाउट इनइक्वालिटी बहुत बढ़िया टॉपिक है लास्ट टॉपिक सो रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन डे गला 26 नवंबर 2024 75 years of adoption of constitution we have celebrated now the question of inequality this constitution is for all development is for all government is for all now why there is a discrimination why there is inequality so when you talk about liberal frameworks or positive role in intervening and reducing inequality on point because of core social indicators at the time of independence so there is liberalism so as a political ideology there was an insistence that there should be freedom for citizens to carry out activities without any state interference so there was the belief that only in free environment could human potentiality be the intellectual moral or physical be realized now when there is freedom only during freedom we can realize our moral physical and intellectual possibilities so these are liberty is core value of liberalism liberty or freedom is core value of liberalism indian constitution katha jodi ame kahiba it create a liberal political state in india but consider social inequality social and economic inequality india is maximum I have talked about Gini coefficient समस्त मन थी भाव Gini coefficient high India Gini coefficient India high so it is state should be given a positive role to intervene and create condition for everyone to participate equally in the development process रे कौन दरकार कहली डेवलपमेंट प्रोसेस रे एटी स्टेट मु कहूची पार्टिसिपेट करिया दरकार इक्वल पार्टिसिपेशन करिया दरकार constitutional this is the constitutional vision article 38C ऊपर कहबी DPSP 38 + 2 of DPSP ये कहूची the state shall strive to minimize inequality of income eliminate inequality in the state opportunity को increase करियो so जो constitutional ideology हमें देखुचे it emphasizes on reducing inequalities and it creates an egalitarian society based on opportunity so 39C economic system कौन पई कहूची ना ये कहूची economic system गोटे कंट्री एमती हवा दरकार कि जेमती सेठी concentration of wealth होउनथि distribution of wealth होउथो otherwise neither we can ensure economic justice nor we can ensure social justice to everyone so यदि हम देखिबा egalitarian outlook कोन its vision of equality aims to create an egalitarian society to minimize economic inequalities among the people यदि हम जॉन रॉल्स egalitarian liberalism ऊपर डिस्कशन करिबा एटी तीनटा इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऊपर डिस्कस करा जाए इक्वल बेसिक लिबर्टी इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड डिफरेंसेस हैला सो एटी कॉन्स्टिट्यूशन कोन कहा ऊपर फोकस करछंदी ना फोकस करछंदी इगैलिटेरियन सोसाइटी ऊपर
फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी ये सब ए प्रिंसिपल जो इगालिटेरियन लिबरलिज्म प्रिंसिपल कहली इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल डिफरेंस प्लस तुम्हारा एटी कहली इक्वल बेसिक लिबर्टी ये सब कोडी डिस्कस होची ना पार्ट 3 एवं पार्ट 4 यदि किसी केस कहूची केस स्टडी कहूची ये प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट मध्ये कंफर्म कले कोथरे ना डीएस नाकर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 एटी कोर्ट कहले socialism basic framework of socialism in the constitution is to provide decent standard of life to the working people social security from cradle to grave जन्म रो मृत्यु पर्यंत social security welfare state provide हवा दरकार एटा डीएस नाकरा केस रे कहले सो एआर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर यूनियन एंड अदर्स रे कोन कहले एटी कहले आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाउंड इन द प्रिएम्बल फंडामेंटल राइट डीपीएसपी यार ऑब्जेक्टिव कोन ना ये सबु जगह रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गोटिए पॉइंट ऊपर डिस्कस करछन दैट इज इगालिटेरियन सोसाइटी प्रोटेक्ट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस सोशल जस्टिस दियंतु इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करंतु इक्वालिटी स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी समस्त को प्रोवाइड करंतु ये की कहउछन सुप्रीम कोर्ट एटी कंफर्म करछन कोन कंफर्म कले ना ये कॉन्स्टिट्यूशन रो बेसिक ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन रो दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैला इन द सेम वे 1997 मसिया रे गोटे केस आसिला सामंता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एठी कोर्ट कोन कहले ना कोर्ट इंटरप्रेटेड दैट मीनिंग ऑफ द वर्ड सोशलिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इन इनकम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिवो समस्त कोन करिवो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिवो इगालिटेरियन सोशल ऑर्डर दबो इट विल रिड्यूस इनइक्वालिटी आर्टिकल 39 बी डीपीएसपी जस्टिस वीआर कृष्णा आयर ये ताको इंटरप्रेट कले कोन हु केस रे स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस श्री रंगनाथ रेड्डी केस एथिरे कहले कि पब्लिक एंड प्राइवेट रिसोर्सेज फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स पब्लिक रिसोर्स हो प्राइवेट रिसोर्स हो ये सब कम्युनिटी रिसोर्स रे दियो सो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी सहित माने जीवा दरकार कोन पई ना टू एन्श्योर इगैलिटेरियन सोसाइटी कोन पई ना टू एन्श्योर इगैलिटेरियन सोसाइटी सो रिसेंटली कोर्ट overturned this interpretation without locating it within article 39. So it empowers the state to intervene and to regulate the economic system to prevent the concentration of wealth in the hands of few. Now economic reform, let's talk about economic reform and inequality. Neoliberal economic reform तो हमें adopt कले एलपीजी मॉडल आसला 1991 रे हमें एटी इंपोर्टेंस देले कहा बिना प्राइवेट सेक्टर को लिबरलाइजेशन को प्राइवेटाइजेशन को ग्लोबलाइजेशन हो कि नहीं सो एठी गोटे इनइक्वालिटी व्हेन वी टॉक अबाउट इनइक्वालिटी यार गोटे रिपोर्ट आसिला इंडियन इनकम इनइक्वालिटी 1922 टू 2015 फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलियनरी राज फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलियनरी राज 2019 रे आसिला द किया आनिले ना थॉमस पिकेटी याको ऊपर मु पढै छी इकोनॉमिक्स क्लास सो लुकास चांसेल एंड थॉमस पिकेटी यहाँ पर डिस्कस कले कोड ना पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सो दे डॉक्यूमेंटेड दिस राइजिंग इनइक्वालिटी इंडिया रे केमती इनइक्वालिटी बढ़ोची यहाँ पर डिस्कशन है so this research paper shows that the top 1% earners had a share of less than 21% of total income केते top 1% earner एमानक पाखरे total income रो less than 21% of total income 1930s रे but independence परे जो welfare state intervention हे गला constitutional ideology आसी गला सेते बेले 1% earners they had a share of 6% of the total income in 1980s 1% लोगों पाखरे 6% परे सो नियोलिबरल रिफॉर्म पर 1990 रे कोन एटी मेजर चेंजेस देखिया को मिला एटी स्ट्रक्चरल चेंजेस देखिया को मिला इन इकोनॉमी कैपिटल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ी गला कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ी गला वेलफेयर इंटरवेंशन कमी गला स्लो इंटरवेंशन स्टेट एटी कम इंटरफेयर कला कोन कहली स्टेट एटी कम इंटरफेयर कला सो द स्टेट टुक द पॉजिटिव रोल ऑफ क्रिएटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग मार्केट्स रादर देन वर्किंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग एन इगैलिटेरियन सोसाइटी सो यार कॉन्सिक्वेंस यदि हम देखिबा 1% income reach to 22% of total income केते कहली 1% ता 22% of total income so inequality status 2024 रे आहुरी अधिक बढ़ी गला top 1% of income and wealth share reached 22.6% 40% by 22-23 so very high 1% केते 40% रेट आसे की पहुंच गला so 2022 रे आसला state inequality report it was prepared by Institute for Competitiveness this is commissioned by Economic Advisory Council to the PM ये हाईलाइट कला कहा पर ना पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2019-20 ये रिकॉर्ड कला कि एवरेज मंथली वेज 25,000 केते 25,000 माने वर्ष को 3 लाख टका दिस इज ऑन बाय टॉप 10%
remaining 90% they earn less than 25,000 a month. So top 10% मासको 25,000 पाउछन, then rest 90% ସେମାନେ 25,000 तळकू मासको इनकम जनरेट करछन। जे लास्ट टॉपिक टाको समस्त मिसई की पढिबे, पूर्वर गोटे इनइक्वालिटी ऊपर गोटे क्लास देखि माने एडिटोरियल क्लास नहीं गोटे टॉपिक थिला, लास्ट और लास्ट टू लास्ट क्लास रे डिस्कशन हेतला। सो आज किछि इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर हम डिस्कशन कले, बहुत पांचटा इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन रहिला ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऊपर डिस्कस कले हमें, रिपब्लिक गवर्नमेंट एंड इनइक्वालिटी ऊपर भी डिस्कशन कले गोटे टॉपिक। देन आउ को टॉपिक डिस्कस कले, टॉपिक एटा गला फर्स्ट और लास्ट टॉपिक कहली। Then we talked about 4 air quality over insurgent groups केमती डेमोक्रेटिक ग्रुप रे चेंज होचंती। देन फैमिली प्लानिंग मेथोडोलॉजी, फैमिली प्लानिंग, insurgent groups, डेमोक्रेटिक मेथड अडॉप्ट करछन। इंसर्जेंट ग्रुप्स कोन करछन एठी डेमोक्रेटिक मेथोडोलॉजी को सब अडॉप्ट करछन। आउ गोटे टॉपिक हमें प्रथमे डिस्कस करथिले, दैट इज ऑल अबाउट लिबरल आर्ट्स। लिबरल आर्ट्स सो ये गला पांचटा इंपोर्टेंट टॉपिक, आको समस्त पढ़िबे बुझिबे, यदि डाउट आसे लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन। हमें पुनी नेक्स्ट क्लास रे एमती आउरी अनेक इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करबा। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।